Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, once again I welcome you all in the lecture number 12 of Computer Communication and Networks. Dear students, what we were studying in our previous lecture, we were studying digital communication. We were discussing how can we transmit data digitally. How can we transmit digital data over a digital signal. In that, we were studying a line coding scheme. There are different types of line coding scheme that we have discussing, in which we have so far what we have discussed, that is unipolar non-return zero, polar, in which we have discussed an RZ, biphase Manchester and differential Manchesters. We have also studied bipolar AMI and pseudo-ternary. Today, what we are going to study, that is multi-level. Students, what is a multi-level encoding scheme? In which the scheme which we are going to study, that is a 2 binary and 1 quaternary, that is 2B 1Q scheme. In this, we have a transition table that is given. A programmer programmed this transition table while the encoding scheme. What is doing over here? There is a table in which, as you can see, that there are two binaries, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, and 0, 1, and there are a quarter for one quaternary. It means quaternary means it is four levels. This is level number 1, this is level number 2, this is level number 3, and this is level number 4. There are four levels of voltage levels, and there are two binaries. 2B means two binary. Students, there is a transition table which is programmed, in which if there are two numbers and two binary numbers and their power is 2, it means we have four combinations, and these combinations are, you know it very well, that 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. There are two kinds of transition will performed over here. If the previous level is a positive, then what will be the next level? That is, for 0, 0 it will be plus 1, for 0, 1 it will be plus 3, for 1, 0 it will be minus 1, and for 1, 1 it will be minus 3. And what will be the next level if the previous level is positive, negative? As you can see, there are two levels, one is a positive, another one is a negative. So what will be happen if the next bit is a 0, 0 and the previous level is negative? Next level will be minus 1. If the next bit is 0, 1 and the previous level is negative, what will be the next level? That is minus 3. If 1, 0 previous level is negative, then the next bit is positive 1, and if the previous level is positive, then the next bit will be minus 1. Now we can see over here that what is happening. If for the very first transition there are 0, 0, and as there is no previous level for a positive or negative, what will we do over here? That this transition we will draw over the positive 1. Now the next one is the 0, 0. Now we will see that the next one is the 1, 1. Next bit is 1, 1, and the previous level is a positive, right? So the previous level is positive and next bit is a 1, 1. What will happen? That is a minus 3, right? So we will draw a line over here, that is a minus 3. Next is 0, 1. What will happen if the previous level is negative? 0, 1 के केस में अगर previous level negative है तो we will draw a line over minus 3. Again यहाँ पे minus 3 आ गया. Then is a 1, 0. 1, 0 से previous जो है वो negative है. Negative अगर 1, 0 से previous है तो what will be the transition? That is a plus 1. You can see over here that is a plus 1. And next one is a 0, 1. In 0, 1 transition, if the previous level is a positive, what is happening? That is a positive 3. Students, this is a multi-level 2B1Q scheme in which the transition table has been already available, and we can draw the scheme by using this table. So we are assuming positive original levels, and then we are starting by using this table. In this, there are two binary, one signal in each in bit intervals, and there are four level of signals.
that is used in actually DSL, that digital subscriber line technology, to provide a high speed connection to the internet by using the subscriber telephone line. Next is the multi-transition coding. Students, what is the multi-transition coding? Non-return zero inversion and differential Manchesters are classified as differential encoding. What is happening in the inversion or differential Manchester? Just recall, just rewind your previous lecture. What is happening over there? वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे inversions हो रही थी. Use two transition rules to encode binary data. या no inversion हो रहा था या inversion हो रहा था. नॉन रिटर्न जीरो इन्वर्जन के अंदर जीरो पे क्या करते थे हम और वन पे क्या करते थे, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग के अंदर जब वेन एवर द जीरो और वन एनकाउंटर तो हमने ट्रांजिशन करनी थी या नहीं करनी थी. सो यहाँ पे दो बातें हो रही थी, या इन्वर्जन हो रहा था या नहीं हो रहा था. सो इफ वी हैव अ सिग्नल विद मोर देन टू लेवल्स, अगर हमारे पास ये तो दो लेवल्स की बात हो रही है, वी कैन डिजाइन अ डिफरेंशियल एनकोडिंग स्कीम विद मोर देन टू ट्रांजिशन रूल्स. तो उसके लिए वी नीड अ मल्टी लाइन ट्रांसमिशन. थ्री लेवल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे दैट यूजेस पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वोल्टेज. यानी कि आपके पास जीरो भी होगा, पॉजिटिव वोल्टेज भी होगी और नेगेटिव वोल्टेज भी होगा. थ्री ट्रांजिशन रूल्स है टू मूव करने के लिए बिटवीन द लेवल्स. What are these three transition rules? Again, students, here you can see that if the next bit is 0, there is no transition. If the next bit is 1 and the current level is not 0, the next level is 0. If the next bit is 1 and the current level is 0, the next level is the opposite of the last non-zero. It is also given. So you can draw your scheme very easily, and this is also a transition state diagram. What is happening over here? If the next bit is 0, you will check the what about the no transition, you will remain there. And what will happen if the next bit is 1, right? We will see that last bit is non-zero, राइट. देन पॉजिटिव वोल्टेज पे जाएंगे और नेक्स्ट बिट जीरो है तो वहीं रहेंगे. और अगर लास्ट नॉन जीरो लेवल है, दैट इज पॉजिटिव वोल्ट है, तो माइनस वी पे जाएंगे और नेक्स्ट बिट अगर जीरो है तो हम वहीं पे मूव करेंगे. देन अगर नेक्स्ट बिट वन है तो हम वापस जीरो पे चले जाएंगे, यानी कि स्टेट को चेंज कर देंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट इज दिस जीरो वोल्ट, इट इज जीरो, देन इट मीन्स नो ट्रांजिशन. If next bit is 1, then current level is not 0, the next level is 0, right? But if the next bit is 1 and the current level is 0, this is the this one case कि आपकी जो next bit है वो 1 है और current level आपका 0 है. The next level is opposite of the last non-zero. अब ये यहाँ पे हम 0 पे तो हम इसके opposite चले जाएंगे. ठीक है. अगेन हमारे पास 0 आया तो हम वहीं पे ही रुकेंगे, लेकिन अब हमारे पास जब 1 आएगा और हमारी करंट स्टेट 0 है तो हम ऑपोजिट ऑफ 0 पे चले जाएंगे. और यहाँ पे ये बात आपने ख्याल रखनी है कि वी हैव थ्री levels. One is for positive voltage, another is for negative zero, and another one is for the negative volt. तो अब जहाँ पे आप ओरिजिनली रिजाइड कर रहे होंगे, यहाँ पे आप इस वक्त हैं, और जैसे ही 1 आया, नेक्स्ट बिट इज 1, द करंट लेवल इज 0, the next level is opposite of the last non-zero level. So this is the last non-zero level. So you will reside over here now, right? Then the next bit is 1 and the current level is not 0. The next level is 0. So but if the next bit is 1 and the current level is 0, the next level is the opposite of the last. So यहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, दिस इज 0, दिस इज फॉर 1. उसके बाद अगर 0 है तो रिजाइड करेंगे, अगर 1 आता है तो उसकी ऑपोजिट चले जाएंगे, फिर 1 आया तो उसके ऑपोजिट चले गए, दोबारा 0 आया तो हमने वहीं पे रहना है. उसके बाद अब जब 1 आया तो हमने उसके ऑपोजिट चले जाना है. अगेन हमारे पास 1 आया तो हमने उसके ऑपोजिट, और हमने किसको फॉलो किया है, अपने पैटर्न को फॉलो किया है. Now you can see over here that there is no zero transition over here. So what is happening for 1? If you initially you were at 0 state, for what will you do? First of all, positive, 0, negative, 0, positive, 0, negative and 0. So हमने अपनी ट्रांजिशंस को तो कब कब कर रहे हैं मल्टी लेवल 3 स्कीम में, जहां जहां 1 आता है हम जिस जगह पे रिजाइड कर रहे होते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. Students, again, you need so much practice for these line coding scheme. Without practice, you will never understand what is a line coding scheme. So far, what we have discussed about line coding scheme.
Students, we have more encoding schemes that converts a digital data to digital conversions. The next one that we are going to study is a block coding, and after that we will see that what is a scrambling. स्टूडेंट्स ब्लॉक कोडिंग क्यों हमने ज़रूरत महसूस हुई, हम क्यों जो है वो ब्लॉक कोडिंग को करने जा रहे हैं, क्यों के वाई वी नीड टू स्टडी दिस टेक्निक. Students, line coding is always needed, but the block coding and the scrambling may not be needed, and they can be used with a combination of a line coding to reduce some issues, to eliminate some problems. Which kind of problems? Like a synchronization problem or a DC component problem. Students, as you have already know that the major problem was in line coding scheme was a synchronization and a DC component. Students, to solve synchronization problem, we have got second technique which is different from the line coding technique, is block coding. It is actually used with the association of the line coding technique that can be used as a combination of line coding. In block coding, we can take a data of m bits and we can convert our data of m bits into n bits. So we will see all these things one by one. So there are three steps of block coding. The first one is the division step, of which m bits. This is the division of m bits, and how many bits we have? We have 4 m bits, right? B is a binary, and this 5b is also a binary. We are going to study 4b/5b encoding scheme. For example, in the division step, sequence of bits is divided into groups of m bits. For example, the m bits are 4 bits and n bits are 5 bits. The original bit sequence is divided into 4 bits group, that is original 2 raised to power 4, which is equals to 16. टोटल जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसमें 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 वही वाला पैटर्न हम जो है वो यूज करेंगे. द फर्स्ट स्टेप वाज द सब डिवीजन स्टेप, राइट. द सेकेंड स्टेप वाज द सब्सटीट्यूशन स्टेप. पहला स्टेप क्या था? डिवीजन स्टेप था. सेकेंड स्टेप जो था वो हमारे पास जो था वो डिवीजन स्टेप है, राइट. उसके बाद जो है हम करने के जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो 4 बिट का कोड है तो आपके पास जो आउटपुट है वो 5 बिट्स का ग्रुप होगा. फाइनली इज अ कॉम्बिनेशन स्टेप. कॉम्बिनेशन स्टेप में क्या होगा कि n बिट ग्रुप्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रीम. सो द न्यू स्ट्रीम जो होगी वो मोर बिट्स होंगी देन द ओरिजिनल बिट. वही बात बार बार जो हम कर रहे हैं कि 4 बिट्स होंगी, 4 बाइनरी होंगे, इनपुट तो 5 बाइनरीज होंगे, आउटपुट. ये क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स? एक्चुअली m bits जो है वो into a data of n bits by inserting some extra bits. वो कौन सी extra bit है that we are inserting over here? That is called actually redundant bits. Redundant bits की क्यों जरूरत पेश आई? We place these bits in a way जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस हो, तो उस केस में रिसीवर इज नॉट एबल टू distinguish where the zero bit in a receiver is where is a long sequence of zeros and where is a one bit in long sequence of ones. हम ये नहीं देख हम क्या करने चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम इन बिट्स को उस एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम वहाँ पे जीरो बिट इन अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वेयर द वन बिट्स इन लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वन है वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि इंसर्ट कर देते हैं रिडंडेंट बिट को एंड द नेक्स्ट बिट एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस हम जब रिडंडेंट बिट को ऐड कर देंगे तो हम नेक्स्ट जो है वो अपना बिट्स को स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, दिस इंसर्शन ऑफ रिडंडेंसी बिट 0 और 1 क्या करती है? ये सॉल्व करती है हमारे सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को. बट द इंसर्शन ऑफ दीज रिडंडेंट बिट्स आल्सो प्रोवाइड अस सम इनहेरिट फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन. So when we do a block coding, we actually got 3 steps of process. The first one is the division step, the second one is the substitution step, and the last one is the combination step. So using block coding, we received a data stream. What we have done in the first step, we have divided the stream into m bits. And then there is a substitution.
process, and after that combining n bits group into n stream, and here and n is always greater than m. if we have m अगर हमारे पास 4 है तो यहाँ पर n हमारे पास जो है that is 5. Students are using block coding 4B, 5B with NRG line coding scheme. हम इसको NRG inversion NRG inversion coding scheme जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था. वो प्रॉब्लम क्या था? That is of a synchronization problem. एक्चुअली यहाँ पे हम यूजिंग ब्लॉक कोडिंग 4B/5B में उस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो 4B/5B कोडिंग स्कीम was designed to be used in combination with non-return zero inversion. So non-return zero inversion has a good signal rate, but it has a problem, that is a synchronization problem. A long sequence of zeros can make receiver clock lose synchronization. ये आपको याद होगा कि हमने उसमें non-return zero inversion के अंदर the only cases when we have a synchronization जहाँ पे issue कर रही थी वो वही केस था जहाँ पे long string of zeros आ रही थी. So one solution to solve this synchronization is prior to ending with non-return zero inversion, change the bit stream to avoid having a long streams of zeros. हम long stream of zeros को avoid करेंगे और हम उन bits को change कर देंगे. So 4B 5B scheme is the answer to achieve this goal. हम इस goal को कि जब हम avoid करेंगे long string of zeros को हम maximum यहाँ पे जो है वो 3 zeros भी avoid करेंगे. तो block कोड क्या करता है? doesn't have more than 3 consecutive zero. ब्लॉक कोड में हमने 3 consecutive जीरो से ज्यादा जीरोस नहीं रखने होते. रिसीवर की साइड पे क्या होगा? दोबारा वहां पे सेंडर की साइड पे जो है वो एनआरजी डिकोडर लगा होगा, रिसीवर की साइड पे एनकोडर लगा होगा. जो फर्स्ट क्या करेगा? वो डीकोड करेगा स्ट्रीम को ऑफ बिट्स को और देन वो डीकोड करेगा उसको. क्यों? ताकि कोई रिडंडेंसी ना आ सके. You can see in diagram over here that this is at the sender side there is 4B 5B encoder, then there is a non-return zero inversion encoding over a link. आपके डिजिटल डाटा है और डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिट हो रहा है. एट द एंड ऑफ रिसीवर अगेन नॉन रिटर्न जीरो डिकोडिंग है जो एनकोड करेगा आपके जो डिजिटल सिग्नल है और देन वो उसको डीकोड करके रिसीवर तक भेज देगा. Students, you can see that 4-bit data words can have 2 raised to power 4 combinations. 5-bit code words can have 2 raised to power 5 32 bits combinations. But we need just 16 combination. So we have 16 unused groups for 4B or 5B. But some of extra unused groups are used for the control signaling purposes और remaining को जो है वो हम discard कर देते हैं. In this table, you can see that this is 2 raised to power 4. This is 2 raised to power 4, which is equals to 16. ठीक है? They are standard format 0000, 0001. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The total how many combinations you have? 2 raised to power 4, that is equals to 16. Students, these are some control sequence codes. Okay, they are encoding schemes, and in encoding schemes the pattern is 2 raised to power 5 that are equals to 32. अब यहाँ पे ये हमारे पास 4 zeros है. 4B 5B का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो नॉट मोर देन 3 zeros इकट्ठे हो सकते हैं. तो उसके लिए हमने these are actually students they are encoded by the programmer. ठीक है? इसमें से हमने 32 कॉम्बिनेशंस में से कुछ यूज कर लिए, कुछ को हमने जो है वो कोई कंट्रोल सीक्वेंस के साथ अटैच कर दिए और रिमेनिंग को हमने डिस्कार्ड कर दिया. सो दिस ऑल्दो यहाँ पे भी 111 आ रहा है, लेकिन ये जो एनआरजी इन्वर्जन की मेन प्रॉब्लम थी कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरो को हमने पे प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी. इसी तरह आप यहाँ पे जहाँ जहाँ जीरो देखेंगे आप देखेंगे हर जगह पर कहीं भी जीरोस जो है वो 2 से ज्यादा नहीं है या जो है जीरोस जो है वो 3 से ज्यादा नहीं है. Students, this is the mapping code. You can map if you have a long bit of string like 0 0 1 1 0 0
0 1 1. So if we have a long let's suppose if we have a long stream of bits, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको 4 4 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे 0 0 1 1 है, तो हम 0 0 1 1 का जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे 0011 के अगेंस्ट कोड क्या है, तो वो हम लिखेंगे. सो ये मैप होता जाएगा इसके अगेंस्ट के 4 बाइनरीज जो हैं वो 5 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगी. एंड यू कैन सी ओवर हियर एज वेल वी हैव 1111. सो व्हाट इज द कोड फॉर 111? दैट इज 111101 एंड दैट इज 0001. सो अगेन यहाँ पे 3 जीरो है, उसको ब्रेक करके 01001 कर दिया गया. सो वी हैव 4 बिट्स ब्लॉक एंड वी हैव 5 बिट्स ब्लॉक आउटपुट. हमारे पास 4 बिट्स इनपुट होंगी और 5 बिट्स हमारे पास आउटपुट होंगी. Students, the next is a very important topic, that is a scrambling. What is meant by a scrambling? Bipolar encoding has a narrow bandwidth and doesn't create a DC component. अब पीछे ब्लॉक कोडिंग ने क्या किया? ब्लॉक कोडिंग ने हमारी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व कर दिया गया, बट देयर इज स्टिल सम प्रॉब्लम एग्जिस्ट, दैट इज ऑफ द डीसी कंपोनेंट. तो डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो सोल्यूशन ढूंढा है, दैट इज ऑफ द स्क्रैम्बलिंग. Students, however, a long sequence of zeros upset the synchronization. Bipolar AMI can be used for longer distances if we can find a way to avoid a long sequence of zeros in the original stream. So we need to technique that does not increase the number of bits and does provide synchronization. So scrambling is one of the solution of a synchronization, in which it substitutes long zero level pulses with the combination of the level to provide a synchronization. So it replaces unfriendly runs of bits with a violation code that is easy to recognize and remove the unfriendly levels. Students, AMI used with scrambling क्या है? That is a part of the AMI rule is modified to include the scrambling. हमने उसको मॉडिफाई कर दिया गया है कि स्क्रैम्बलिंग क्या करता है, वो अपोज करता है टू ब्लॉक कोडिंग को, इज डन एट द सेम टाइम एज इन कोडिंग. क्या बात हो रही है कि द सिस्टम जो है दे नीड्स टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स. जैसे अभी पीछे हमारे पास रूल्स डिफाइन किए गए थे, यहाँ पे भी स्क्रैम्बलिंग रूल्स जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं. So there are two techniques that is used, B8ZS and HTB3. So what is happening? Modified, we can say that this is a modified AMI encoding. Sender पे modified AMI encoder लगा हुआ है, violated digital signal है, transmit हो रहा है over a link, and then receiver के end पे भी modified AMI encoding है. Students, the first technique is B8ZS. B8ZS क्या है? It substitutes 8 consecutive zero with, ये क्या करेगा? 8 consecutive zeros को convert कर देगा 3 zero, not more than have 3 zeros. Then VB0 VB. V is stands for violation, a non-zero voltage. It violates the line encoding rules, AMI rule of encoding. ये उसको violate कर देगा. B stands for bipolar. It implements the bipolar line encoding rules. So non-zero level voltage is according with the AMI rule. अब यहाँ पे देखें, we have 1 0 0 0 0 0 0 0 0. How many zeros are over here? 1 2 3 4 5 6 7 8. What is happening over here? जब भी 8 0 आएंगे उसके लिए हमने ये वाला पैटर्न यूज करना है. 0 0 0 VB0 VB. Look at here, there are 3 zeros, then the voltage, then bipolar में जो हम कर रहे हैं opposite direction में चले जाएंगे, then 0, right, then violation होगी, then again bipolar की तरह हम चले जाएंगे. So if the previous level is positive, अगर previous level negative है तो फिर हम नीचे से फिर हम negative से start करेंगे. 1 के लिए 3 0, then voltage, ठीक है, sorry, violation, then the bipolar, again 0, वायलेशन कर रहे हैं हम उसकी कि वी स्टैंड नॉन जीरो वोल्टेज है, इट्स वायलेट्स द लाइन एंड कोडिंग रूल. जो लाइन कोडिंग के रूल्स थे ना, हम उससे वायलेट कर रहे हैं, हम उसको दूसरी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे, हम उसी जगह रह रहे हैं जहां प्रीवियस वाला आपके पास जो था बाइपोलर था. एंड देन वायलेशन हुई एंड देन द बाइपोलर.
नेक्स्ट वन इज HDB3 सब्सटीट्यूट. 4 कंसेक्टिव जीरोस को हमने 30V और B00V which depends on the number of non-zero pulses after the last substitution. Students, again there are the rules. What are these rules? If number of non-zero pulses is even, the substitution is B00V to make total number of non-zero pulses even. यहाँ पे even हमने बनाना है. If non-zero pulses is odd, the substitution is 000V to make total number of zero pulses even. So different situation in HDB3 scrambling technique क्या है कि यहाँ पर हमारे पास आपने देखना है कि ये देखें, यहाँ पे 2 ones है, इसका मतलब ये even है. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमें 4 zeros, दिस इज जस्ट लाइक बाइपोलर, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक हो गया. अब यहाँ पर हमारे हैं इसके इधर 2 ones देखें हमारे पास इवन थे, अब हमारे पास 4 zeros आ गए हैं. 4 zeros इधर इवन के केस में हमने क्या करना था, B00V. ठीक है, दिस इज बाइपोलर 00 एंड वायोलेशन, राइट. देन आपके पास अब यहाँ पर एक और 1 आ गया, यहाँ तक इवन था, अब 3 ones हो गए, ऑड हो गया. इन द ऑड केस व्हाट यू विल डू, 30 एंड वोल वायोलेशन. देन इवन ही है स्टिल यहाँ पे, तो आप क्या कौन सा यूज करोगे, इस वाले को, बी को, यहाँ बी बाइपोलर 00 एंड वायोलेशन. वायोलेशन मीन्स कि यहाँ पे हमें यहाँ जाना चाहिए था लेकिन हम वहां नहीं गए और हम वायोलेशन पे रहे. एंड देन द 0. Student, this is the different situations in HDB3 scrambling techniques. I hope you have understand very well about the block coding technique and the scrambling. Students, line coding technique is always needed, but to avoid the pros and cons of line coding schemes, we can be added the block coding techniques and scrambling as well. Please revise all these techniques and draw by your hand. Take a long bit stream of bit of 8 bits, 16 bits, 32 bits and draw all these schemes by your own hands. ठीक है, so आप लोगों ने take out the register and draw the spectrums and do all the line coding schemes and revise all the scrambling and block coding schemes. This is end of our today's lecture. What we have studied so far, we have studied what is a digital data to digital signal conversions, in which we have studied a line coding scheme, block coding scheme and scrambling. I hope all of you have cleared your concept. Do practice at home, otherwise you will not clear your concepts more deeply. This is end of today's lecture. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.